used to go to Mashairas all the time with my parents when I was a kid. So I wanted to introduce myself. My name is Sadia Covert. And आती है, समझ भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ, लिख नहीं सकती हूँ. Thank you, thank you. तो आपकी इजाज़त है कि मैं इंग्लिश में भी बात कर लूँ? Thank you. तो मेरा नाम सादिया Covert है and I am an attorney. I've been an attorney for the last 10 years. मैं DuPage County Board के लिए खड़ी हो रही हूँ elections में on March 20th, 2018 as a Democrat. I've been a lawyer for the last 10 years with my husband, Covert and Covert. I have been fighting to keep families in their homes by practicing foreclosure defense. I have also co-authored House Bill 2390 recently, which is the hate crime law in Illinois that was passed unanimously and signed into law by Governor Rauner. Thank you. I've been working hard for the past 5 to 6 years. I'm a married woman with 3 small children. But despite that, I have been training police officers. I'm a state certified police instructor. I have raised cultural awareness. I do diversity training for police officers. I also am a founder and an owner of a nonprofit organization that raises cultural awareness about different groups through diversity education. And that has been tremendous in my area because it's uniting everybody together. All South Asians, African Americans, Muslims, Hindus, everybody. We're uniting everybody together. So what I want to bring to DuPage County, now DuPage County Board District 5 is in Naperville. How many of you are here from Naperville? Right here? Okay. I'm in North Central Naperville. I'm also in Aurora and parts of Lisle. So I'm from, if you're not here from Naperville, Lisle, or Aurora, I'm sure you guys have friends from Aurora and Naperville areas. So what I want to do is I want to bring unity and balance to DuPage County. I'm running as a Democrat, but I wish to bring balance to DuPage County Board. Right now, we're mostly conservative, we're mostly all Republican, but I want to bring a Democrat to the table. But I need your support. I need you to spread the word that there is a girl named Sadia Covert who is the most qualified candidate for this race, and vote for her on March 20th. I'm also having a fundraiser next week, December 7th. If you're interested, you could always talk to me afterwards. But I want to let you guys know that I don't want you to vote for me or spread the word about me just because I'm South Asian or because I'm Muslim or anything like that. I want you to choose me because I am the most qualified. I do have merit and I've done the work. I don't plan on doing things. I already do things. I already have been doing things. So imagine if I could pass hate crime law and I could do all of this work with 3 children and without an elected position or without any resources. Imagine how much more I can do for you with an elected position as your county board member. So I hope you vote for me on March 20th. My name is Sadia Covert. Thank you very much. Thank you, Sadia, for your beautiful words. Definitely. We have another motivational youth among us today, Bushra Amiwala. I'd like to invite her on the stage. Bushra Amiwala is a 19-year-old Pakistani Muslim youth who is a candidate for the Cook County Commissioner seat. She is a student at DePaul and here is to talk about the election and the importance of voting. Let's put our hands for Bushra Amiwala. Assalamu alaikum everyone. Thank you all so much for attending this event and thank you Mr. Ali Khan for inviting me. Sadia did a beautiful job
addressing the crowd, but I can also speak Urdu, but my Urdu is not as nice as hers, but I can just try if you all would like. And if I see people looking at me strange, I'll switch back into English. But I'm 19 years old and my parents came to the United States. My dad came in the 1980s, my mom came in the late 1990s, and I was born and raised here. I'm currently a sophomore at DePaul University, major in marketing with a double minor in community service studies and public policy studies. So in college, they do not teach you how to run for office. They don't teach you how to get elected, but what they do teach you is how to market and brand products. They teach you how to do that with a marketing major. So that's why I'm majoring in marketing. And also, I want to be very conscious of our communities and ways that we can better them, which is why I have a minor in community service studies. And then finally, crafting all of this up and implementing it in the most tangible way is through public policy, which is where that minor comes into play. So, मैं ना एक 16 साल आदमी के जो 16 साल से बैठा है सीट में उसके सामने खड़ी हुई हूँ election में. He's been there for 16 years and I'm running against him. No one has ran against him in 16 years, and that really bothered me. I said, why isn't anyone running against him? And I realized that if Donald Trump could become president with all of these bad things that he said and he's done in the past, but he still got elected to be our president, then I could probably become a Cook County board member, or at least I can try and run at this age. And that's what really motivated me. And he was saying all these negative things about Muslims, about just like other minority groups, and I was like, why isn't anyone standing up against this? Where are the Muslim people in the government? And this was March 2017, when there was no one. I looked and I was like, someone's gonna run, someone's gonna stand up and do this, but no one did. So when someone asked me, they said, hey, maybe you should run for office because you're clearly very interested, you have a background in politics, even though you're kind of young, like you know how it's done. I said, okay. I was like, you know what do I have to lose? And that's the mindset I went into this. What do we have to lose? We have a lot to lose if we don't engage civically, but we don't have anything to lose if we just try, which is why I need everyone's support in here. Everyone is on Facebook. I know everyone is because I see how many Facebook friends my mom and dad have. They're all on Facebook. You can simply like my Facebook page as a way to keep in touch with the events that I have and I go to and the various things I'm involved with. Another thing is we need a lot of money. This is something that makes me very uncomfortable because जब से मैं छोटी थी अम्मी अब्बू बोलते हैं किसी से कभी पैसे नहीं मांगना है, नानी भी पैसे दी इनसे नहीं लेना है, but when you run for office, that's a huge part of running because it is so expensive. You need money to pay your people who are working for you. It costs $3,000 just to get a lawyer and then $225 per hour just to meet with him. These are just some of the expenses. And getting in contact with voters costs money as well. And I didn't have anyone in the South Asian, Pakistani, Indian community who ran for office who I could talk to about this, who could be a mentor for me. But now, alhamdulillah, after doing this for about 9 months now, I've met a huge wave of people and I have so many supporters, which is very incredible, who really believe in me. So I hope to bring a fresh perspective and a new change and voice to Cook County. As I mentioned, I'm running for 16 years. He's 70 years old and he hasn't mentioned if he's running again or not, so I'll find out after I file the official paperwork. But we're doing this and it's a part-time position, so I think it is extremely practical for this to do so, but I need all of you to vote. I'm not even telling you to vote for me, but just vote, because not voting is a vote. If you do not vote, then that's your subconscious vote for being okay with whatever is happening. So please go out and register to vote for whichever candidate you like, but you have to vote, because one of the main things when I was trying to get support from some of the elected officials, they told me, they said, people in your community do not vote. I don't care to help you guys. He literally said this. He was very honest and frank. He said, it does not affect me what's happening in your community because you will not vote against me and you will not vote for me. So I don't care. And he literally said that to me. And I was like, oh my God, so we have to do something about this. And this is what we are doing. So change starts here. Please be a part of what we are calling a movement. And thank you all so much for attending and for letting me through. Oh, I'm running for the Cook County Board of Commissioners, the 13th district, which is Evanston, Skokie, Martin Grove, Niles, so that area. So it's kind of far from here. So even if you don't live in the area, there are many other ways you can support. Inshallah, we're having another fundraising dinner. And if
if you are interested, you will see details on my website page. My name is Bushra Amiwala once again, and thank you all for listening and attending tonight's event. Thank you for putting me in the board, and I wish you all the best. And now I give it to Mrs. Monique. I don't have to introduce Mrs. Monique Khan because everybody knows her. This place belongs to her. अच्छा भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पहली चीज़ आपको बताऊं, जिस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि अली खान ने ये शुरू किया है उर्दू समाज ऑफ शिकागो। That's such a beautiful name. I don't know anybody who has anything like that, which is totally for entertainment purposes. उर्दू के यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें उर्दू शेर शायरी, things like that. But this is strictly for entertainment, isn't it? Yes? Thank you. और उर्दू एंटरटेनमेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है गज़ल और गीत, जो कि हमारे पास दो आर्टिस्ट आए हुए हैं जिनमें से बैठे हैं, और हमारे पूरन लाल जो कि तबला बजाएंगे, ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, और तारिक साउंड पर है, और रॉबिन्सन जरा से अच्छा, और राशिद बुखारी भी यहीं कहीं है, हाँ है, और वो है राशिद बुखारी, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। पहले इतना अच्छा नहीं गाते थे मगर अब बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि अब इन्होंने सीखा है उस्तादों से, अब उस्तादों के उस्ताद बन गए हैं। तो I want to welcome all of you to this program. It's going to be lovely. We'll have a good time. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सलीम भाई और उनकी पूरी फैमिली, दोस्त, और बहुत अच्छी सपोर्ट उनकी मिली है, और आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म शुरू करने की कोशिश किया है मैंने, जो उर्दू और हिंदी को मिक्स करके उर्दू समाज, किसी ने क्वेश्चन किया था उर्दू समाज किस तरह आपने समाज कह दिया, मैंने कहा भाई उर्दू और हिंदी दो ऐसी लैंग्वेजेस है जो एक दूसरे बहने सके तो नहीं है लेकिन सौतेले बहने कह सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि उर्दू और हिंदी को मिलाकर उर्दू समाज के नाम से मैंने शुरू किया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सपोर्ट करने का, आने का, स्पेशली सुनील भाई और दीपक शाह, ऐश्वर्या, ये सब, और सलमा हुसैन जो है पहला टिकट मैंने सलमा हुसैन को दिया एंड स्पेशली निगार भी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मैंने इनसे कहा कि मुझे कुछ बोलना है, जो है उसको हमने स्टेज पे नहीं बुलाया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये बोर्ड में है तो तुमको बुलाना है, बोर्ड में आ जाओ भाई। ये कभी हो सकता है कि हम सब यहाँ हो, गुरमीत नहीं हो, अबीर नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। अबीर तुम भी आओ भाई, ये सब हमारे अपने हैं, है ना, तो हमें सबको बुलाना चाहिए। कोई बात नहीं, वी लव यू, आई लव यू, मेरे बेटे हो। नाउ फाइनली वन पर्सन इज मिसिंग। गीता आ जाओ, अब ये कोरम कंप्लीट हुआ है। नाउ दिस इज कंप्लीट, ओके, नाउ वी हैव एवरीवन। और एक सना खान का है, सना खान जो कि सना खान, सना, ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब ये हमारा कंप्लीट कोरम है। These are the people who are going to make it happen. These are the people that are supporter and the founder of this. Let's give them a round of applause, everybody.
थैंक यू। मैं ऐसे यहाँ खड़ी भी बोल रही हूँ जैसे मेरा प्रोग्राम है, इट्स नॉट माई प्रोग्राम, ये अली खान का प्रोग्राम है। अब मैं इनको दे देती हूँ, कहीं मैं कुछ और गलत बात ना कह दूँ। देखो अभी मैंने राशिद की इंसल्ट कर दी है, बहुत शर्मिंदा है मेरे से। रूठे में राशिद बुखारी, रूठे हो तुमको कैसे What a wonderful voice, Monica auntie. For next, Mohammad Abdul Rahman Salim, please come on the stage. I know we are interrupting you, but please your presence will be more honored on the stage. Please give a round of applause. He will be honored by none other than Mr. Sunil Shah. And this is an honor for him to be with us tonight and to support such a great cause for Urdu Samaj of Chicago. Again, I would like to ask our Monik auntie to come up on the stage. You are not done. Mrs. Monik Khan, you are asked back on the stage. Monik auntie, you are again required at the stage. Please come. You have to be there. आपने कुछ किया, काम पूरा नहीं किया. And Mr. Gulzar H. Kebani. Monica auntie. Please give a round of applause for Mrs. Monique Khan. That was a well-deserved recognition for her. Can I have Mrs. Gulzar H. Kawani on the stage, please? And she too would be honored by Mr. Sunil Shah and Mr. Ali Khan.
that will create a path for the future. So what could be a better recognition recognized by one of the best community leader, Mr. Sunil Shah. Thank you so much. And now we are going to recognize Sadia Kawat because she is daring to do something that definitely recognizes herself apart from others. Please put up your hands for her too. Thank you so much. So with this we have completion of the recognition, and now this is the time everybody is waiting for some entertainment, for relaxing, and I would like to invite our MC for the rest of the evening, Mr. Waliuddin. I know he doesn't require any recognition. He has been well-known and done his part very effectively, and people will wait for him to come up on the stage to get his beautiful Urdu shairis. Put up your hand for Mr. Waliuddin. थैंक यू। आपने इतना कह दिया, पता नहीं मैं इतना डिजर्व करता हूँ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि यू डिड एक्सीलेंट जॉब टू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं ये ज़रूर कहूँगा, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, एंड हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग आए। जिस तरह से ये प्रोग्राम चल रहा है उसकी नौयत से मैं कुछ जो कहा गया मुझे उसको फॉलो करता हूँ। थोड़ा सा मैं शायरी के बारे में, व्हाट इज़ मेरी शायरी, शायर तो बहुत है, मेरी शायरी। मेरे अशार को तुम छू कर देखो, मेरे अशार को तुम छू कर देखो, उसको तुम महसूस करो, मेरे दिल की धड़कन इसमें महसूस करोगे जब भी सुनो। ये सांस की लज्जत इनमें और बुए मोहब्बत भी, तख़य्युल का है जादू इनमें और तेरी सूरत भी। जज्बात की गर्मी इनमें, मौजों की रवानी भी, कितने छुपे हैं राज और अपनी कहानी भी। गर सांस की संगत मिल जाए और इनको तरन्नुम मिल जाए, कभी गिरिया हावी हो जाए, कभी दिल की खली खुल जाए। हर रुत की बहार इनमें और आवारा रातों का कुमार इनमें, हर अदा तेरी इनमें और मचलता है मेरा प्यार इनमें। मेरे अशार को तुम छू कर देखो, इसको महसूस करो, मेरे दिल की धड़कन तुम सुनोगे जब भी तुम सुनो। तो मेरा जो मैंने अपने आप को हमेशा कहा है, गुलदस्ते के हिसाब से मैं हर कोई चीज़ को करने की कोशिश करता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको एक एक थोड़े थोड़े बताता चलूँ कि हर मौजू पे, अब जैसा ये मैंने कहा सीरियस, फिर मैं बताऊँगा मैंने कुछ थोड़ा बहुत कुछ वाक़ा की तरफ इशारा किया है। लोग अखबार खोलते हैं तो हर तरफ सफ़ेद भरा रहता है, क्या हो रहा है, तो कहाँ जा रही है कौम। जो दिल पे गुजरती है कह दिया हमने, जो दिल पे गुजरती है कह दिया हमने, जज्बात को शेरों में पिरो दिया हमने। दीन और दुनिया को साथ लेके चलो वली, एक को पाया एक को खो दिया हमने। And I leave this up to your imagination what I'm talking about, क्या पाया क्या खोया। और फिर एक और रो मोहब्बत का, I love marriage, she's sitting over there। मैं हमेशा कहता हूँ, हुस्न था बेमिसाल क्या करते, हुस्न था बेमिसाल क्या करते, ऐसे में हम सवाल क्या करते। थी मोहब्बत तो कर ली शादी, इससे बढ़कर कमाल क्या करते। और फिर मज़ाहिया का एक और दौर, जब आप जाते हैं बैक होम, हर वक्त अब तो ट्रम्प की बातें मिल रही कि भाई ट्रम्प की ट्वीट का हर कोई शिकार है यारो, स्ट्रेस और टेंशन में हर कोई गिरफ्तार है यारो। तो उसके हिसाब से वो भी सोच लें कि उन पर भी बनता है। अचानक कमरे में जब आ गई वो,
अचानक कमरे में जब आ गई वो, सर पे न थी भी घबरा गई वो, जान के बदले अब्बा जान कह दिया, एक पल में इतनी उम्र बढ़ा गई वो। तो ट्रम्प का भी देखिए कभी खोलते नहीं है सर अपनी खोपड़ी। और ये भी है, लोग हमेशा इल्ज़ाम देते हैं बैक होम जाओ, तो ये कहते हैं, उस पर भी मैंने कहा जब भी हमारी उनसे मुलाकात है, घूम फिर के करना सियासत की बात है, अजब मंतक दलील अपनों की, अब्बा के वाशरूम में सियाही का हाथ है। हर बात तो सियाही अमेरिका करते। तो मैंने कहा भाई हाथ में माइक है, कुछ करके दिखाना है, हम किसी से कम नहीं, ज़माने को बताना है। आज कुछ कहना वली ज़रूर है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो उसके हिसाब से अब जिस प्रोग्राम के लिए हम आगे जा रहे हैं उसका उन्वान आपको पता है। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा मैं कहते चलूँ कि शायरी एक जज्बात के इजहार का ज़रिया है, और इसीलिए शेक्सपियर ने कहा था कि शायरी न रही तो जज्बात गूंगे हो जाएंगे। There's no way to express yourself deeply। हर चीज़ कह सकते हैं। तो जज्बात इंसानी से लेके हर जात, फिर कुदरत, गाड, एवरीथिंग, महबूब, जो चाहे आप लिखते हैं, जुल्फ़ों से लेके हर चीज़ पर। और इन सब शायरी को दिलकश अंदाज में गीत और गज़ल को आगे लेके जाते हैं कौन? जो गुलकार होते हैं। मेहंदी हसन ने गाया गुलों में रंग भरे तो वो मशहूर हुआ। नूरजहां ने गाया, मशहूर आपने सुना होगा उसने भी, कि मुझसे पहली सी मोहब्बत में महबूब नमान। तो एक जगह पहुंच गए थे फैज साहब, तो किसी ने वो सुना रहे थे, कोई वाहवा नहीं बोल रहे थे। तो फिर एक साहब खड़े हुए कहने लगे मेरी फरमाइश है आप वो नूरजहां वाली गज़ल सुना दें। तो वो शायर को बुलंदियों तक पहुँचाने वाला गुलकार होता है, वहाँ तक पहुँचा देता है। और इसी के हिसाब से मैं कहूँगा आज के लिए गीत और गज़ल है आपके लिए, हमने सजाई है ये महफिल आपके लिए। तो जब तक आप बैठे हैं हम भी रहेंगे, ये ज़रूर कहूँगा। और कहते हैं कि बहुत से लोगों को गज़ल का क्या ख्याल होता है, किस तरह आता है, वो ये कि वादा करके ना वो आए तो गज़ल होती है, वादा करके ना वो आए तो गज़ल होती है, पलकों को वो अपनी झुकाए तो गज़ल होती है, और ख्वाबों में आके सताए तो गज़ल होती है, और फिर सामने चली आए तो गज़ल होती है। तो लोग इसी तरह से कहते हैं। अब मुझे ये कहना है, दो चार और शेर मैं सुना दूँ, क्योंकि अभी हम गुजरे हैं थैंक्स गिविंग डे से। तो मेरा एक रुख वो भी है, मैं हैदराबादी में कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो उसका थैंक्स गिविंग डे का उर्दू में तर्जुमा ये होगा, शुक्रिया मनाने का दिन, शुक्रिया अदा करने का दिन। कहले शुक्रिया अदा करने का दिन मनाते हैं लोग, शुक्रिया अदा करने का दिन मनाते हैं लोग, टर्की है बोल को मुर्गा खिलाते हैं लोग। मौत का एक दिन मुकर्रर है अपन बोलते, मौत का एक दिन मुकर्रर अपन बोलते, अमेरिका में सब दिन मुकर्रर करके मनाते हैं लोग, मदर डे, फादर डे, एवरीथिंग। अब बेगम पीर मुर्शद समझ रही मुझको, एयरपोर्ट पे जूतों को हाथा लगाते हैं लोग, समझते पीर मुर्शद हो गए। और शायरी के मैदान में कोई पीछे नहीं, एक दो शेर छोड़ो पूरा दीवान चुराते हैं लोग। इतना से अपनी शायरी करता हूँ, इसके लिए सुनाता। और इसके लिए कहने का तो बहुत कुछ है, फिर मैं आपको कभी सुनाऊंगा बीच में अगर टाइम मिला। लेकिन हम प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। मुझे पता चला कि ये आएंगे, तो यही कहूँगा कि अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए, कभी गुस्सा कभी प्यार करना चाहिए। पसंद आए किसी की गीतों गज़ल, तालियों का शोर एक बार करना चाहिए। तो उसके शोर में मैं ये कहूँगा कि यादों को खुद कदम को फिर से संभाल लें, उस हंसी को गज़ल में उतार लें। उसके लिए मैं बुला रहा हूँ, दिल थाम के बैठो जिनकी बारी है, अपना मुनफरिद और गायकी का अंदाज और सारे साज राग से वाकिफ। उनके साथ यही होता है, उनके साथ मैं कई दफ़ा प्रोग्राम भी कर चुका हूँ और गज़ल की दुनिया में सब उनसे वाकिफ़ है। इन्होंने सीखा है निसार बज़मी, पाकिस्तान के म्यूज़िक डायरेक्टर, और इंडिया के सुल्तान भाई के साथ, और पाकिस्तान टीवी पे भी
अपने जौहर दिखा चुके हैं। बाय प्रोफेशन फॉर 35 ईयर इज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड इंश्योरेंस। 208 में छोड़ दिया था, फिर दोबारा आ गए। क्या वजह थी मैंने पूछा नहीं इनसे। तो मैं कहूँगा नाम इनका आता है तो हर चीज़ ठहर जाती है। संगीत के साथ मिलकर इनकी आवाज़ दिल में उतर आती है। आगे भरपूर तालियों में राशिद बुखारी। हमेशा तो उसने कहा छोड़ो सब, उसने दाढ़ी बढ़ा ली, हमेशा नमाज पढ़ रहा है 5 वक्त की। बीवी ने उसको देखा, देखो कमबख्त, पहले औरतों के शौक में था, बूढ़ों के शौक में नमाज पढ़ रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं पॉइंट मिल ही जाता है। और शेर था, हमारे एक दोस्त बहुत गुनगुनाते थे कि सुबह होते ही चांद किधर जाता है, मेरे पड़ोस के आंगन में उतर आता है। उसी पड़ोसन से उनकी शादी हो गई। जब मैं मिलने गया तो सब गाना वाना भूल के मुकेश का गाना गा रहे थे। उन्हें क्या हुआ, कहते दिल जलता है तो जलने दे। मैंने भाई अभी क्या हुआ, तो शादी के 4 ही साल हुए। कहते यार तुझे पता है मैं बेपनाह उससे मोहब्बत करता था, अब मैं उससे पनाह चाहता हूँ, पनाह चाहता हूँ। तो अब हमारे पास जो इनका साथ देने आ रहे हैं मौसीक़ार, उनके साथ आ रहे हैं हमारे एवरीबडी नो हिम, उस्ताद पूरन रियाज। Everybody in Chicago and around the world know him. He have worked with the music directors in India and he is a well-known। और इनकी तबले और उंगलियों पे जो इनका संगत आप देखें कैसा साथ देते हैं हर किस्म की मौसीकी में। और मैं इनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ, मुझे बहुत बड़ा एहसास है, ऑनर टू बी विद यू अगेन पूरन भाई। और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं जिससे आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और आप सुनेंगे भी, वो nothing but very well known. He is a musician himself. He organized the shows, or one of the very best, मैं कहूँगा sound engineer, nothing but तारिक। ये खुद भी इतने प्रोग्राम करते हैं, इतने ऊंची। मैं कहता यार तुम कहते हैं ब्रेक चाहिए, क्योंकि एक्टर भी एक्टिंग करते करते होता है यार मैं डायरेक्शन कर लूँ या प्रोड्यूस बन जाओ। बुखारी साहब तशरीफ लाइए हजूर।